Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivardhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So we discussed in our previous session Maitreya Rishi. So this chapter, this 7th chapter of the 3rd canto of Srimad Bhagavatam, the discussion is going on between Maitreya Rishi and Mahatma Vidur. Mahatma Vidur asks some most fundamental questions about the truth, about the tattva of the living entity and the Lord. And we discussed in the previous session, that how Maitreya Rishi beautifully gives some very beautiful examples to answer these questions asked by Mahatma Vidur. So he gives example of moon and how the reflection of the moon shakes because of movement of water. Because when moon's reflection is you see on water, if water moves, it looks as if moon is moving. So that was to substantiate that living entity also suffers because of external energy of the Lord, which is Maya, or external potency of the Lord. Then finally, Maitreya Rishi, he concludes by saying that the only process through which we can make our human life successful is by surrendering to the Lord, surrendering to at the lotus feet of the Lord, and chanting and glorifying the holy name, and hearing the glories of Lord Shri Krishna. Hearing Krishna Katha is the solution to all miseries of this material existence. Just by hearing Krishna Katha, which is also called Krishna Kathamritam, the nectar, a person can become free from all miseries of this material existence. So that's what we discussed in our previous session. Now today we'll start with text 15, Shloka number 15 of the 7th chapter of the 3rd canto of Srimad Bhagavatam.
Vidura uvacha sanchina samshayo mahyam tava suktasina vibho ubhayatrapi bhagavan mano me sampradhavati. Vidura uvacha sanchina samshayo mahyam tava suktasina vibho ubhayatrapi bhagavan mano me sampradhavati. Translation. Vidur said, O powerful sage, my lord, all my doubts about the Supreme Personality of Godhead and the living entities have now been removed by your convincing words. My mind is now perfectly entering into them. Now you see, what is now Mahatma Vidur, what is he saying? So he's saying, Vidura Uvacha Sanchinnah Samshayo Mahyam. Sanchin, chin means to, chitvana means to cut off. So Sanchinnah Sanshayo Mahyam. Sanshay means all the doubts. Mahyam means unto me. So whatever the doubts are there, all my doubts have been destroyed. Sanchinna means they have been cut off, they have been destroyed. Tava sukta asina vibho. By your suktas. Sukta means glorification of Krishna. That's why there are prayers to Lord Vishnu. They are called Purusha Sukta, because Lord Vishnu is Purusha, and the prayers to glorify Lord Vishnu are called Purusha Sukta. So here you see in the shloka the word is used Tava Sukta. Sukta means the glorification of Krishna. So Tava Sukta Asina Vibho. So by your glorification of Lord Krishna, Sanshayo Mahyam, all my doubts have been destroyed. Ubhayatrapi Bhagavan. Ubhayatrapi Bhagavan. Ubhayatrapi means all your glorification of Lord Krishna and his relationship with the living entities. Ubhayatrapi Bhagavan mano me sampradhavati. So within my mind, all these doubts which had entered into my mind, now I am, now all my doubts are removed, and now I am entering into this knowledge. That means now this knowledge is, I'm able to grasp this knowledge which you have given me. You see. So now Mahatma Vidur is not an ordinary person. He is a transcendental personality. He is a Mahatma. Krishna talks about Mahatma in the Bhagavad Gita. He says, Mahatmanastu mam partha daivim prakritim ashrita. Mahatma means daivim prakritim ashrita. Those who are. So who is a Mahatma? So bhajanti ananya manaso, one who is living under my Daivi Prakriti. Krishna says in the Bhagavad Gita that one who is living under my Daivi Prakriti, under my superior potency or internal potency. And what does he do? What does a Mahatma do? So he says, Lord Krishna, that bhajanti ananya manaso, bhajan, he is always engaged with my devotional service, bhajan. So Mahatma Vidur is such a great soul. He is a Mahatma. He is a personification of a great soul. So he is not an ordinary person. But all the doubts which he is asking, they are genuine doubts which every human being has. And he is saying that the explanation of Maitreya Rishi is so great. So beautifully Maitreya Rishi has explained that all the doubts in the heart of Mahatma Vidur has been destroyed.
So even a great person like Mahatma Vidur has to approach a spiritual master to get or to learn the science of Krishna consciousness. Mahatma Vidur is not an ordinary person. He is the son of Vyasadeva. Just imagine. And in his previous life, he was Yamraj. If you remember, we discussed it in the second chapter, in the second canto. So in his previous life, he was Yamraj. And in this life, he is Mahatma Vidur, son of Vyasadeva. So he is not an ordinary person. But even he has to approach a spiritual master to learn the science of Krishna consciousness. So he's saying here, Ubhaya Yatrapi. So the relationship between living entities and Krishna So relationship between Krishna and the living entities. Krishna is the controller and we are controlled. He is the predominator and we are predominated always. That is an eternal relationship between us and Krishna. So revival of this lost consciousness is the goal of human form of life. And that is called real knowledge, to revive our lost consciousness, which is Krishna consciousness. So to come to this platform of real knowledge, we require association of great souls like Mahatma Vidur or Maitreya Rishi. So Mahatma Vidur also knows, and that's why, although he's a Mahatma, he's not an ordinary person, but even he has to take shelter of a great soul like Maitreya Rishi. Although he himself is a special personality, a transcendental personality, but even he has to approach a spiritual master like Maitreya Rishi and learn the science of Krishna consciousness, ask his doubts. Although these doubts are, Maitreya Rishi is, Mahatma Vidur is asking Maitreya Rishi for all of us. He is a Mahatma, but sometimes Lord makes these devotees as instruments to propagate the science of Krishna consciousness. And that is why Mahatma Vidur is also asking these inquiries to so that all of us could receive this knowledge without any deviation, the science of Krishna consciousness. Now text 60, shloka number 60. Sadve tad vyahritam vidvan natma mayayanam hare abhatya partham nirmulam vishwamulam na yad bahihi. Sadve tad vyahritam vidvan natma mayayanam hare abhatya partham nirmulam vishwamulam na yad bahihi. Translation. O learned sage, your explanations are very good, as they should be. Disturbances to the conditioned soul have no other basis than the movement of the external energy of the Lord. You see. So what is Mahatma Vidur saying here? So he's saying, Sadhu etad vyahritam vidvan. So vyahritam means the explanations. Vyahritam means the narrations. So sadhu etad vyahritam vidvan. So sadhu means basically when we appreciate someone, we call sadhuvad. So sadhu means appreciation. So Maitreya Rishi, so Mahatma Vidur, he's appreciating the explanations of Maitreya Rishi. So what is he saying? That sadhu etab, these your vyahritam, your explanations about Krishna are glorious. Na atma maya yanam hare. And he's saying, na atma maya ayanam hare abhati apartham nirmulam.
So he's saying that the na atma maya ayanam, the movement of atma maya. Atma means the external energy of Krishna. This material energy of Krishna, ayanam, the movement of this external energy of Krishna is abhatya partham nirmulam, is the cause of the bewilderment of living entity. And abhati, it appears as this living entity is affected because of, why it appears like that? Because you see, abhati, apartham, although this material world has got no meaning, that's why it is called maya. Ma means not, and ya means that which is. So maya actually is illusion. There is no basis. That's what it is. He's saying here. Abhatya partham nirmulam. Nirmul. Mul means root. And nirmul means no root. That means no basis, no foundation. Vishvamulam yad nayad bahihi. And Vishvamulam, that means the root of this creation is Lord Sri Krishna. So he's saying here that this material energy of the Lord looks like it is moving and it is creating bewilderment of the living entity, but actually that is abhati. It looks like that. And that is why living entity is affected. So again, it gives us the example. We can remember the example of he gives the explanation of how, if you remember, we discussed that example, that how when the moonshine falls on, the reflection of moonshine falls on a river, that means when you see the reflection of moon on a river, in a river, and as the river moves, it looks as if the reflection is also moving. The same example is given here, that actually reflection is not moving, it's unreal, but it looks like real. Similarly, this material energy of the Lord is also unreal, but it looks like real because it has been created by Krishna like that. Right. So Vishvamulam Nayad Bahihi. This very important word, the last sentence of the shloka. Vishvamulam Nayad Bahihi. There is no other cause of this material creation except Krishna. He is the Vishvamulam. He is the Lord. Now text 18, shloka number 18. No, I think we have to discuss the 17th shloka. So text 17, shloka number 70. Yascha mudhatamo loke yascha buddhi param gataha tavubhav sukham idhete klishyatyantharito janaha. Yascha mudhatamo loke yascha buddhi param gataha tavubhav sukham idhete klishyatyantharito janaha. Translation:
Both the lowest of fools and he who is transcendental to all intelligence enjoy happiness, whereas persons who are between them suffer the material pangs. You see, so what is Mahatma Vidur saying here? He's saying, Yashcha mudhatamo. Mudhatamo, you see the word which he's using. Mudhatam. Mudhatam means those who are most foolish. Amongst the fools, even amongst the fools, they are the most foolish. Mudhatam means more than a mudha. That means even more fallen than a mudha. Mudha means foolish person. Mudhatamo means most foolish person. So yascha mudhatam loke yascha buddhe param gata. So those who are mudhatam, those who are most fallen, most so yascha buddhe param gata. So he's saying that those who are buddhe, those who are intelligent people, they also have gone transcendental to this material happiness. And yascha mudhatama loke. And those who are foolish people, mudhatam means most foolish people, they also sometimes, it looks as if they are not affected by material happiness or distress. So those who are most fallen, they are also happy. And those who are not so fallen, those who are very, very intelligent, extraordinarily transcendentalists, they are also happy. But you see, tavobhav sukhamedhete klishyatyantharito janaha. But those who are janaha, those who are ordinary living entities, they are klishyati, antarito. So klishyatyantarito janaha. Right. So basically, Maitreya Rishi, so Mahatma Vidur, he's telling Maitreya Rishi that two kinds of people are happy in this world. Two categories of people are happy in this world. First category is those who are lowest amongst humankind, almost like animals. They also sometimes look as if they are happy. And those who are transcendental people, those who have transcended the material modes, pure devotees of Krishna, they are also happy. Wherever they are happy. But tavobhav sukhamedhete klishyantir janaha. But those who want to utilize, or those who are neither very advanced nor very fallen, they sukhamedhete. They are the people who actually suffer in this material creation the most. You see how nicely Mahatma Vidur is giving this beautiful example. So he's saying that yascha mudhatamo loke. So those who are mudhatam, those who are most foolish amongst human beings, just like animals. Mostly nowadays we see people leading life of animals, just like animals. So mudhatam, those, they are called mudhatam. Those living entities or those human beings who almost lead life like animals, they have no understanding of their own. So they also sometimes seem to be happy. Just like a pig, a hog. He takes pleasure in filthy things. He takes pleasure in dirty things. So for him, for a hog, this option is very good. Isn't it?
For a pig, wherever the pig is, because it does not know what is the standard of happiness in a human life. So those who don't know about what happiness, what is real happiness, they almost lead life like animals. And they sometimes it looks as if they are happy, although they are not happy, but sometimes it is said ignorance is bliss. They don't have anything to do. They simply waste their human form of life. So such people here are called Moodhatama, most foolish people. And sometimes it looks like they are happy, although they are not happy, but it gets projected as if they are very happy, right? Then the second category here in this shloka actually is divided into three parts. So second category is about intelligent transcendentalists, those who are transcendental people. Those who are transcendental people, those whose intelligence has transcended material platform, they are also happy because they are happy in Krishna consciousness. They are always serving Krishna, so they are happy in service to Krishna. Now here, so these two categories, one is the most foolish people. They are also, sometimes it looks like they are happy. Those who are very, very exalted, they are also very happy because they are always with Krishna. But in between these two are ordinary living entities who are also sense gratifiers, but so this third category of people are the people who suffer the most. Why? Because neither they are in ignorance nor they are in on a transcendental plane, right? So that is why such people require guidance. Those who are Moodhatama, those who are most foolish people, they will very difficult for them to understand Krishna, right? So those who are most foolish, they cannot understand Krishna. Those who are very, very intelligent, they understand Krishna, so they are also happy. But here the third case is when people are actually neither fool nor very intelligent. So what should they do? So at that time, we require the guidance of a spiritual master. And by guidance of the spiritual master, even these so-called third-class people can be promoted to the level of first-class people, right? So Krishna here, he talks about these three classes, three categories. Third-class people are those who are those whom Mahatma Vidura is referring them in the first part of the shloka. Moodhatam means most foolish people. Then Yascha Buddhe Param Gata. So those who are Buddhe, those who are very, very intelligent, very brilliant, very special, those who are transcendental, they also are in bliss, right? So that is why every human being should associate with pure Vaishnavas and get promoted to the first platform, get promoted to Buddhe platform, that means transcendental platform. So very beautifully here in the shloka, Maitreya Rishi, Mahatma Vidura is explaining that three kinds of people are there. Those who are fully like animals, so they are also, it looks as if they are happy, although they are not, but it looks as if they are happy. Those who are very exalted, they are also happy. But those who are in between these two, they are unhappy and they suffer the most. Right. So this third category of people, those who fall in between intelligent and unintelligent people,
they are the people who can be promoted. They can degrade also to lower level, and they can be promoted also to higher level by good association. So good association is the key to reach higher platforms of spiritual life. Now text 18, shloka number 18. Artha bhavam vinishchitya pratitasyapi natmanaha tam chapyushmat charana sevayaham paranude. Arthabhavam vinishchitya pratitasyapi natmanaha tam chapyushmat charana sevayaham paranude. Translation. But my dear sir, I am obliged to you because now I can understand that this material manifestation is without substance, although it appears to be real. I am confident that by serving your feet, it will be possible for me to give up the false idea. Now you see, this is the secret of spiritual advancement, which is mentioned here by Mahatma Vidur. So what is he saying? Artha abhava vinishchitya prati tasyapi na atmana. So as you have explained, so Mahatma Vidur is saying that I have now understood what you were trying to explain to me. So I have now understood that this material world has got no substance, right? So this material world, this material creation has got no earth. Earth means, you see, earth abhavam. You can see on your screen the shloka. Earth abhavam. So abhav means to be deprived of, right? Or that which is destroyed. So artha abhavam vinishchitya. So he's saying that this material world has got no earth. It has got no meaning. It is unreal. It is false. But so he's saying that I have understood that it is false. But then tam chap yushmat charana. But by serving your lotus feet, sevayaham paranude. By serving your lotus feet, I can I'll be able to give up this material existence, give up this material sense gratification, to move to higher platforms of existence. So what is Mahatma Vidur saying here? That so arth abhavam, you see. So Mahatma Vidur, he is giving the secret of spiritual advancement here. What is he saying? Tam chapyushmat charana sevayaham. So by serving your lotus feet, right? It's not that Mahatma Vidur has asked these questions and Maitreya Rishi has answered these questions and now Mahatma Vidur is free and he will go away. No. Maitreya Rishi is his guru, is his master, his spiritual master. So what is he doing? He's saying that by serving your lotus feet, I can become free from all miseries of this material existence. So serving the lotus feet of the great souls is mentioned here as by Mahatma Vidur as the process. Because Maitreya Rishi is his guru. And that is why he is willing to surrender and bow down at the lotus feet of Mahatma Vidur and service to, basically by serving the lotus feet of
Maitreya Rishi, Mahatma Vidur is saying that he will also understand the science of this science of the absolute truth, science of Lord Shri Krishna. So the greatest fortune of this human life is what? What is the greatest fortune of this human life on earth? So the greatest fortune is unlocked by association with pure devotees. So that's what here Mahatma Vidur is saying, that by associating with you, by serving you. So it's not that Mahatma Vidur has asked some questions and Maitreya Rishi has answered these questions, so Mahatma Vidur will go away. No, he remains there and he serves the lotus feet of his Guru. That's how. So that is what Mahatma Vidur is saying here. So that's what we see here, that finally Mahatma Vidur, he concludes this part of this chapter by saying that you are the Mahatma Vidur is telling his spiritual master that by serving you, I'll become free from all miseries. And this is what Vedic injunction is, that by serving the spiritual master, we attain all perfection in human life. So all of you can like the video, you can comment, you can subscribe to our YouTube channel. Also try to share with all your friends so that more and more people can get benefited from this divine wisdom. So we'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। और प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में ये जो अध्याय है इसमें हम महात्मा विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच की चर्चा देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि महात्मा विदुर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने किए हैं मैत्रेय ऋषि से, और मैत्रेय ऋषि ने उसके बहुत ही सुंदर उत्तर दिए हैं। और हमने देखा अपने पिछले सत्र में कि मैत्रेय ऋषि अंत में बताते हैं कि मनुष्य जीवन की जो सफलता है, मनुष्य जीवन का जो पराकाष्ठा है वो है भगवत भक्ति में, जिसमें वो कह रहे हैं कि हरि नाम और हरि कथा के श्रवण, उससे ही मनुष्य संसार के सारे दुखों को और सारे क्लेशों को पार कर जाता है। अब आज हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को 15वें श्लोक से। तो तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। विदुर उवाच संचिन्नः संशयो मह्यम् तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। विदुर उवाच संचिन्नः संशयो मह्यम् तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Vidur said, O powerful sage, my lord, all my doubts about the supreme personality of Godhead and the living entities have now been removed by your convincing words. My mind is now perfectly entering into them. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो महात्मा विदुर कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि से कि हे महान संत, आप मेरे सारे जो संशय हैं उन सबका वो सब नष्ट हो गए हैं। भगवान और जीव के बीच का ये जो संशय थे मेरे, वो नष्ट हो गए हैं आपके दिव्य वाणी को सुनकर, और मेरा मन अब पूर्णतः इसमें प्रवेश कर चुका है। आप देखिए क्या कह रहे हैं महात्मा विदुर। तो कह रहे हैं विदुर उवाच संचिन्नः संशयो मह्यम। मह्यम मतलब मेरे। तो कह रहे मेरे जितने भी संशय थे वो संचिन्न हो चुके हैं, मतलब उनका विनाश हो चुका है। तब सूक्त आसीना, आपके द्वारा जो सूक्ता बोली गई है, तो सूक्ता का मतलब
भगवान का गुणगान करना। जैसे भगवान विष्णु को जब गुणगान किया जाता है तो पुरुष सूक्ता गाते हैं देवता लोग, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि सूक्तासीना, आपके द्वारा जो सूक्ता बोला गया, आपके द्वारा जो बोला गया, महात्मा विदुर कह रहे मैत्रेय ऋषि को, तो संशयो मह्यम, मेरे सारे संशय, सारे जो डाउट्स थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। तब सूक्तासीना, आपके सूक्तों को सुन के, आपके भगवान कृष्ण के व्याख्यानों को सुन के मेरे सारे जो संशय है वो उनका विनाश हो गया है। उभयत्रापि भगवन मनो में संप्रधावती। तो कह रहे हैं मनो में संप्रधावती, और अब मेरा मन पूर्णतः, मुझे जो प्रश्न थे उनका उत्तर मिल गया है। तो ऐसा महात्मा विदुर यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं। तो आप देखिए, अब महात्मा विदुर कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, जैसा हम सब जानते हैं। हमने दूसरे स्कंद में भी देखा था कि महात्मा विदुर जो हैं वो इससे पहले वाले जन्म में वो यमराज थे, और इस जन्म में वो व्यासदेव के पुत्र बनकर पैदा हुए। तो महात्मा विदुर कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं। भगवान श्री कृष्ण महात्मा की परिभाषा बताते हैं भगवद गीता में, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम भाष्यता। तो वो कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। तो जो महात्मा होते हैं, जैसे महात्मा विदुर हैं, तो ये साधारण मनुष्य नहीं है। महात्मा के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि भजन्ति अनन्य, वो पूरे समय मेरा भजन करते हैं और वो इसी में लगे रहते हैं। तो महात्मा विदुर महात्मा है क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनका पूरा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए समर्पित है। तो महात्मा विदुर इतने महान है, वो महात्मा है, लेकिन उन्हें भी एक गुरु की आवश्यकता है भगवान का ज्ञान लेने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में महात्मा विदुर वो कह रहे हैं कि उनके गुरु मैत्रेय ऋषि के वाक्य सुन के उनके सारे जो संशय है वो नष्ट हो चुके हैं। तो महात्मा विदुर जैसे महात्मा जो व्यासदेव के पुत्र हैं, जो पिछले जन्म में यमराज थे, उनको भी उनको भी गुरु के पास जाना पड़ रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। तो और वो कह रहे हैं कि जीव और भगवान के बीच का जो अंतर है वो भी मुझे पता लग गया है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि भगवान जो है वो नियंत्रक हैं और हम नियंत्रित हैं। तो ये अंतर तो हमेशा ही रहेगा। ये वास्तविक जो जिसे ज्ञान है उसे पता है। और वास्तविक ज्ञान जो जो हुआ है महात्मा विदुर को यहाँ पर, वास्तविक ज्ञान, ये जो दर्शन हुए हैं वो उनके गुरु मैत्रेय ऋषि के कारण दर्शन हुए। तो इसीलिए यहाँ पर वो अपने गुरु को बता रहे हैं कि आपके कारण ये जो ज्ञान है मुझे समझ में आया और इसमें पूर्णतः मुझे संतुष्टि मिली है। अब हम देखते हैं 16वां श्लोक। सात्वे तत्व्याहृतं विद्वन्
नात्मानं नात्ममायनं हरेः आभात आभात्य पार्थ निर्मूलम विश्वमूलम न यत् बहिः साध्वे तद्व्याहृतं विद्वन् नात्ममायायनं हरे आभात्य पार्थं निर्मूलम विश्वमूलम न यत् बहिः। ट्रांसलेशन अनुवाद। O learned sage, your explanations are very good, as they should be. Disturbances to the conditioned soul have no other basis than the movement of the external energy of the Lord. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। महात्मा विदुर अपने गुरु मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपकी जो व्याख्या है वो बहुत ही अच्छी है, और मुझे इससे ये पता चल चुका है कि जीव के जो दुखों का कारण है वो ये जो भगवान की माया है वो है। तो यहाँ पर महात्मा विदुर आप देखिए क्या कह रहे हैं कि साधु एतद व्याहृतम विद्वन, कि हे महान साधु, हे महान गुरुदेव मैत्रेय ऋषि, व्याहृतम विद्वन, ये आपने जो व्याख्या की है इसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं। साधु साधु मतलब साधुवाद देना। वो कह रहे हैं कि आपको मैं बहुत ही प्रशंसा कर रहा हूं आपका। व्याहृतम विद्वन, आपके जो व्याहृतम है, आपके जो विस्तार जो आपने दिया है भगवान कृष्ण की लीलाओं का, वो सब व्याहृतम है। तो न आत्म मायायनम हरे, माया अयनम हरे, न आत्म माया अयनम हरे। आभाति अपार्थम निर्मूलम। तो महात्मा विदुर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया है आपके व्याख्याओं के द्वारा कि न आत्म माया अयनम हरे, कि ये जो भगवान की माया है वो अयनम, वो चलती है, और उसके चलने के कारण आप आभाति अपार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहि, ये जो विश्व मूल है, ये जो जड़ जगत है, ये वास्तविक में निर्मूलम है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो जीव है उन्हें ढक लेता है। तो ये दिखने में बहुत ही विकराल लगता है, इसका जो प्रभाव है वो हमें लगता है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका कोई, ये निर्मूलम है, यानी इसका वास्तविक रूप में कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कह रहे हैं महात्मा विदुर। तो कह रहे हैं कि अगर आपको ध्यान हो, हमने एक उदाहरण की चर्चा की थी, जो चंद्रमा जब उसका प्रतिबिंब पड़ता है पानी में, तो जब पानी हिलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा हिल रहा है, जबकि चंद्रमा हिलता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो जड़ जगत है निर्मूलम है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये निर्मूलम, इसका कोई मूल नहीं। और क्या कह रहे हैं, विश्व मूलम न यद्यपि, इस जड़ जगत का एक ही तो विश्व मूलम न यद्यपि, तो कह रहे हैं कि विश्व मूल यानी भगवान से भगवान के कारण ये सब कुछ चल रहा है।
उनके बाहर, उनके बिना कोई और कारण नहीं है इस जड़ जगत और इस माया शक्ति के चलने का। तो ये जड़ जगत वैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये लगने लगता है इसका अस्तित्व, और इसके कारण जीव जो है वो इस जड़ जगत में आ, इस इस जड़ जगत को ऐसा प्रतीत होता है, जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही एक जगत जो है ये भगवान की सृष्टि है, और इस माया शक्ति के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जीव जो है वो दुखी है, या दुखों का सामना उसे करना पड़ रहा है। वास्तविक रूप में ये निर्मूलम है। आप देखिए श्लोक में कई बार ये निर्मूलम शब्द का प्रयोग आ रहा है, कई बार हमने जैसे इसका प्रयोग किया। तो निर्मूलम मतलब ये जड़ जगत जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये भगवान के कारण अस्तित्व में है, और सिर्फ वही कारण है इस पूरे सृष्टि के, इस जगत के। 17वां श्लोक। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परम गतः तावुभौ सुखम निधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परम गतः तावुभौ सुखम निधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। Translation. Both the lowest of fools and he who is transcendental to all intelligence enjoy happiness, whereas persons who are between them suffer the material pangs. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय ऋषि से महात्मा विदुर अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मूर्ख जो जीव हैं और जो दिव्य हैं, वो दोनों ही आनंद, उन्हें इस जड़ जगत में सुख की प्राप्ति होती है, जबकि वो जो दोनों के बीच में है उन्हें दुख की प्राप्ति होती है। अब आप देखिए, तो इस श्लोक में 3 तरह के लोगों का वर्णन महात्मा विदुर कर रहे हैं। कह रहे हैं यश्च मूढ़तमो लोके, तो कह रहे हैं इस जगत में जो मूढ़तम है, मूर्खतम मतलब जो मूढ़ का मतलब था मूर्ख, तो जो महामूर्ख लोग हैं, जो सबसे अधिक मूर्ख लोग जो हैं, पहले तो उनका नाम ले लिया यहाँ पर महात्मा विदुर ने, फिर किसके बारे में कह रहे हैं यश्च बुद्धे परम गतः, और जिसमें परम बुद्धि यानी जो परमहंस लोग हैं, परम मतलब परमहंस या जो बहुत ही अद्भुत जो लोग हैं, वो भी सुखी रहते। तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः, क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। तो कह रहे हैं कि ये जो 2 लोग हैं, एक तो महामूर्ख और एक महान परमहंस जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, ये दोनों को ऐसा प्रतीत होता है कि सुख की प्राप्ति हो रही है। जैसे जो यहाँ पर कह रहे हैं मूढ़तमो लोके, तो मूढ़तम मतलब जो सबसे मूर्ख जो जीव होते हैं, जो एक तरीके से जानवर के आयाम पे उनका जीवन होता है, तो उनके बारे में यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं महात्मा विदुर कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि से। आप देखिए श्लोक को 3 भाग में बांटा गया है। यश्च मूढ़तमो मतलब जो महामूर्ख लोग, फिर कह रहे हैं यश्च बुद्धे परम यानी जो परमहंस है, जो महान शुद्ध भक्त हैं, जिन्हें स्वयं भगवान दिशा देते हैं वो, और तीसरा कह रहे हैं तावुभौ सुखमेधेते, और तीसरा जो तरह के लोग हैं उनको कह रहे हैं जो क्लिश्यति अंतरितो जन, जो इसके बीच में आते हैं, जो कि महामूर्ख भी नहीं है, मतलब जानवर जैसे नहीं,
मूढ़तम का मतलब हो गया जो महामूर्ख है, एक तरीके से जानवर जैसे जो लोग हैं वो, तो उससे ऊपर है, लेकिन परमहंस नहीं है, मतलब उससे नीचे है, जो भगवान की भक्ति करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, उनके बारे में वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मूढ़तम है उनकी तुलना सुअर से की जाती है मुख्यतः शास्त्रों में, कि जो सुअर होता है उसे अ, गंदगी में आनंद आता है। तो अब वो गंदगी में आनंद लेता है तो वो भी एक सुख है, लेकिन ये प्रतीत होता है कि सुख है, वास्तविक में सुअर को कोई सुख नहीं मिलता। लेकिन वो जो जिस तुच्छ या जिस निम्न कोटि का आनंद है, वो आनंद वैसे है नहीं, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो आनंद में है। फिर कह रहे हैं यश्च बुद्धे परम गतः, ये जो मूर्ख लोग हैं उनको तो आ, सुख कभी नहीं मिल सकता। जो महान साधु संत हैं वो सुखी होते हैं वास्तविक में, क्योंकि उनको भगवान के शरण में वो रहते हैं, तो वो सुखी रहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो लोग हैं, वो उनके लिए ब्रह्म जिज्ञासा बताया गया है कि वो लोग तो दुखी रहते हैं हमेशा, वो कभी सुखी नहीं रहते। और इसलिए उन्हें उनका ये दायित्व है कि वो भगवत गीता समझे, भागवत समझे, और साधु संग से यानी एक शुद्ध भक्त की संगति से वो भी अपने जीवन को सफल बनाए, जो तीसरे गुण के लोग हैं उनकी तरह। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है शुद्ध भक्तों का संग है। और यहाँ पर तीसरे जो तरह के लोग हैं, आ, जिन्हें दुख दुख का सामना करना पड़ता है, वैसे तो सभी को दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन विशेषता इन लोगों को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ वही मैत्रेय ऋषि यहाँ पर मैं महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं कि ये जो सुख है, ये सुख मनुष्य को तब मिलता है जब वो अच्छी संगत में आता है, बुरी संगत से दूर होता है और अपने आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाता है। तीसरे तरह के जीव के लिए शास्त्र लिखे गए हैं, साधु संतों का संग अगर उन्हें मिल जाता है तो वो बुद्धिमान लोगों में परम, जिन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है कृष्ण का, उन तक पहुंच जाएंगे, परम भक्त बन जाएंगे। और अगर उन्हें नहीं सही संग मिला तो वो मूढ़तम यानी निम्न कोटि के आयाम पे भी जा सकते हैं। तो ये तीन तरह के लोग महात्मा विदुर ने बताए। अब 18वां श्लोक, अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तं चाप्युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तं चाप्युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। ट्रांसलेशन अनुवाद। तो महात्मा विदुर कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि से, बट माय डियर सर, आई एम obliged to you because now I can understand that this material manifestation is without substance, although it appears to be real. I am confident that by serving your feet it will be possible for me to give up the false idea. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो महात्मा विदुर कह रहे हैं यहाँ पर कि हे मेरे गुरुदेव, मैं आपका बहुत तो कह रहे हैं कि मैं आप पे कृतज्ञ हूं, क्योंकि आपके कारण मुझे इस जड़ जगत के बारे में पता लगा कि इसमें कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ऐसा लगता है कि ये वास्तविक है। और जब तक और मुझे ये पता है कि आपके चरणों की सेवा करने से मुझे ये सब समझ में आएगा। तो अब आप देखिए, अब इस श्लोक में महात्मा विदुर जो हैं एक दूसरा तत्व लेकर आ रहे हैं।
तो क्या कह रहे हैं कि अर्थाभावम अर्थ अभावम, यानी इस जड़ जगत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, अभाव है। ये इसमें अर्थ का अभाव है। अर्थ मतलब इस कोई लक्ष्य होना, कोई वास्तविकता होना। तो अर्थ अभाव मतलब कोई वास्तविक नहीं है ये। और प्रतीतस्यापि न आत्मना, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तविक है, जबकि ये इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। ताम चाप युष्म चरण सेवया, लेकिन ये सब मुझे समझ में आया है आपके कारण। तो अपने गुरु को वो इसका इसके बारे में बता रहे हैं कि आपके कारण मुझे ये समझ में आया है। तो सारा जो श्रेय है वो अपने गुरु को दे रहे हैं और कह रहे हैं युष्मत चरण सेवया पराणुदेव। तो आपके चरणों की सेवा करके ही मुझे मनुष्य जीवन की सफलता, उसकी पराकाष्ठा प्राप्त होगी, ऐसा यहाँ पर महात्मा विदुर कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि से। तो यहाँ पर एक और तत्व महात्मा विदुर बता रहे हैं, कह रहे हैं युष्मत चरण सेवया। तो वो मैत्रेय ऋषि के चरणों की सेवा के अभिलाषी हैं। तो जब तक हम शुद्ध भक्तों के चरणों की सेवा नहीं करेंगे तब तक तो कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों की सेवा करके ही मुझे ये वास्तविकता समझ में आ सकती है और मुझे इसमें मैं और अधिक मुझे इसका लाभ मिलेगा यदि मैं आपके चरणों की सेवा कर पाऊंगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर महात्मा विदुर जो है वो इस तत्व के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार शुद्ध भक्तों के चरणों की सेवा करके हम भी अपने मनुष्य जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं। तो इसीलिए ये जो जड़ जगत है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तविक है, लेकिन ये इस ये जो जड़ जगत है, ये जो माया शक्ति है कृष्णा की, ये ऐसा बनाया गया है कि इससे जीव भ्रमित हो जाता है, जबकि जीव का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये शक्ति भी, इसमें कोई वास्तविक कोई भाव नहीं है। लेकिन ये सब महात्मा विदुर बता रहे हैं कि अपने गुरु के चरणों की सेवा करके मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे भी प्राप्त होगा। तो वो यहाँ पर महात्मा विदुर इस तत्व के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कर लीजिए। आज यही अपने सत्र को विराम देंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।